CJI DY चंद्रचूड़ के टेन्योर में हमने उनके खिलाफ काफी बैकलैश उठते हुए देखा है और ये क्रिटिसिज्म उनके लास्ट वीक में भी बंद नहीं हुई थी। ये मामले थोड़े और इंटेंस हो गए थे जब कई ऐसे इंसिडेंट सामने आने लगे जिसमें शो हो रहा था कि जजेस अब CJI DY चंद्रचूड़ के कई जजमेंट्स और कमेंट्स के खिलाफ दिख रहे हैं। माहौल और गर्म हो गया जब सीनियर एडवोकेट्स भी CJI के कुछ फैसलों पर सवाल उठाते हुए दिख गए। इसमें से एक फैसला काफी चर्चा का विषय बन गया था जब CJI द्वारा हेल्ड एक फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। असल में CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में न्यू सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम को इनऑगरेट करने का फैसला लिया था ऑन 7 नवंबर। हालांकि सीनियर एडवोकेट्स को म्यूजियम की जगह एक लाइब्रेरी और कैफे चाहिए था और जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस इवेंट को ही बॉयकॉट कर दिया। इस बॉयकॉट के पीछे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी दिखे थे, जो कि आए दिन CJI चंद्रचूड़ के कई फैसलों से अग्री करते हुए नहीं दिख रहे, जिसमें से एक फैसला PM नरेंद्र मोदी को CJI द्वारा उनके घर बुलाने का भी था। और जब ये साफ है कि CJI चंद्रचूड़ के कई फैसले सीनियर एडवोकेट सिब्बल को पसंद नहीं थे, तो ताज्जुब की बात नहीं है कि CJI के फेयरवेल फंक्शन के दौरान सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा भी कि वे उनसे अग्री नहीं करते। लेकिन इन सब के अलावा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर CJI की तारीफ में भी सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्या कहा है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कैसे CJI DY चंद्रचूड़ को देश के बाकी CJI से अलग कहा है और कैसे आर्टिकल 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र हुआ है, एक बार सुन लेते हैं। And the other attribute of Chief Justice was that he was willing to deal with these complex issues. And I dare say that the past Chief Justices would not allow themselves to deal with those issues for years, whether it was 370 or it was same-sex marriage or it was electoral bonds or any of those very large issues that actually change the contours of our being. You were willing to take it forward. You were willing to address the issues within the contours of those complexities, and you addressed them with great clarity. And therefore, we must thank you for all that you have done. We may not agree with you. It's not necessary to agree. But at least we must give you and salute you for the fact that you were ready, willing to deal with those complexities. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI DY चंद्रचूड़ की तारीफ में कहा है कि उन्होंने अपने पिता YV चंद्रचूड़, जो खुद एक समय पर देश के CJI थे, को भी अपने फैसले और टेन्योर से आउटपेस कर दिया है। और उनकी तारीफ में आगे सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा भी है कि एक जज को खुद को इतना ओपन रखना कि आए दिन उसके खिलाफ सिर्फ क्रिटिसिज्म सुनने को मिले, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिब्बल एडेड, you are a trailblazer in this regard. The kind of protections of disability rights, of the judgments articulate a strong rights-centric jurisprudence that reinforces the dignity of the individual and firmly places the burden on government and society at large to remove barriers and enable access for persons with disabilities. We all know that there are about 50 to 90 million people in this country who suffer from disabilities. And you were the first Chief Justice to take on the battle, and you took it on with great you braved it out. You were a staunch votary of nothing about us without us. You want to talk about disability rights? Have us there to talk about them. That's the greatness of this great judge. I can just go on and on and on. Caste issues, dismantling gender stereotypes, access to justice and contributions to the legal fraternity. What have you done? You have actually given access to the millions of people in this country who want to watch what our judges are doing, how they are delivering justice. And then one day, I mean, whether it's good or for the bad, there's going to be a forensic audit. There will be. Because if you expose yourself to telecasting, then people are going to start criticizing you. But the fact of the matter is that you took on that challenge. You allowed people to criticize you. What can be braver than that? So finally, let me say, you will be remembered for what you have done and also
for what you have not done. अब अपने स्पीच के एंड में सीनियर एडवोकेट सिबल ने सीजीआई के लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड पोएम लिखी थी और जिसे सुनाते हुए ही स्टेटेड, End this with a little poem that I have rendered for you. This is how it goes. I'll give you the thing later. I wish to say right at the start, you're a class apart. I wish to say right at the start, you're a class apart. You set the bar, walk the talk, monitored outcomes like a hawk. Thought of those who had no hope, marginalized and simple folk. Pulsated with the people's will, meandered through the law with skill. Matters which lay dormant for years, you dealt with them unlike your peers. No rancor, with patience and ease, you waded through turbulent seas. The institution has your stamp, unlike others who never planned. With an even hand, you oft displayed ends of justice seldom frayed. Freedom of speech, fraternity, you leave behind a legacy. Judgments whose fragrance will last, revisited notions of the past. Free speech and human dignity, cherished notions of privacy. Alternate means of justice spurred, lok adalats to be preferred. Arbitrary actions you abhorred, moral values underscored. Batting in the final test, you played your innings with great zest. Leave behind fond memories, you were the constant, gentle breeze. Thank you very much. और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।